Okay. How many categories of the loop according to conditions? Categories There of are two loop. types. There are two types of loops, sir. Not types. Entry and Categories. Category of loops, sir. Which one? The entry control loop and Exit exit control control. loop. And exit control loop. Okay. What is entry control loop and what is exit control loop? Komal, Anyone want to answer? Shankar, Yes, yes, sir. जो लोग भी जानते हैं वो attempt कर लेंगे. हाँ. In entry control loops, condition first check, and if the condition is initially false, then it repeats the 0 times. And the exit control loop, in the bottom that have a condition. Condition is defined at the bottom of the structure. Okay. Yes, sir. And if the condition is initially false, then it repeats the 1 time, sir. 1 times. At least one time, sir. At least 1 times. So everybody? Yes. Yes, sir. Everybody satisfied with this answer? Yes, sir. Yes, sir. Entry control loop में जो structure होते हैं, the structured that is given through the entry control loop. Okay, condition is defined initially and the top of the structures. Okay, so if the condition is true, then it will repeat. If the condition is false, it will not repeat. Suppose if we provide the condition which is initially false, then the loop will repeat 0 times. Okay. In exit control loop, the condition is defined at bottom of the structure. Okay. If the condition is true, the loop will repeat, but if the condition is false, the loop will not repeat. But initially, if the given condition is false, loop will repeat at least 1 time. One time. Clear? Yes, Yes, sir. sir. So, where we can use entry control loop and where we can use exit control loop? Sir, there are Sir. two places where we can use entry control loop, sir. Sir, what Which- you are asking, sir? Please repeat the question. My question is, where we have to use entry control loop and where or which situation we have to use exit control loop? So we will use entry control loop there where we want our condition to be checked first, and we will use a. I'm asking the practically. Okay. We can So, sir, use both kind of loop. Okay, both categories of loop we can use everywhere. But somewhere exit control loop is advantageous over entry control loop. Entry. So where we realize that the exit control loop is advantageous over the entry control loop, then we can replace that entry control loop with the exit control loop. exit control loop. Clear? ऐसा नहीं है, 1 से 100 करना है, for से भी हो जाएगा, while से भी हो जाएगा, do while से भी हो जाएगा. पर वैसे कोई प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने डिजिट काउंटिंग में एक प्रॉब्लम उठा के आपको बताया था, याद आ रहा है? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. हाँ, मैंने आपको स्पष्ट किया था, क्लियर किया था कि अगर मैं 0 जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, अगर मैं 0 दूं तो रिजल्ट 0 दे रहा है, जबकि रिजल्ट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. ठीक है. तो मैंने कहा था कि अगर इसको ऐसे ही छोड़ेंगे तो हमें एडिशनल लॉजिक इसमें लगाना होगा, और सिंपली अगर इस लूप को हटा के यहाँ पे सिर्फ एग्जिट कंट्रोल लूप लगा देते हैं तो ये जो 0 वाला प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाता है. तो वहां मैंने कहा था कि एडवांटेजेस है, याद आ रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है. तो आपका जवाब यही होगा कि सर दोनों का इस्तेमाल हम रिपीटेशन में कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, जहां पे जिनको हम एंट्री कंट्रोल लूप से बनाते हैं, लेकिन अगर वहां पे एग्जिट कंट्रोल लूप एडवांटेजियस होता है तो हम एंट्री कंट्रोल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप से रिप्लेस कर सकते हैं. यही आपका जवाब होना चाहिए. ओके, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's move to the next question. That is a for loop.
if someone asks that how many parameters for loop has contained, Sir, then three, sir. Three, sir. There are three Three parameters. sir. can you Three elaborate the three parameters defined Yes, inside? sir. Yes, sir. Hello, sir. Yes, sir. Tell me. First one Waiting is my prince. Initialization, First is initialization. initialization, second one is is condition checking, sir. Condition, third one is condition Third checking. one is and third increment one is for incrementation or increment or- decrementation. Sir. okay, Yes. increment and decrement. decrement. Okay. Okay. We know that the for loop having opening and closing braces. Okay. To combine the block of codes. So is it necessary to put the opening and closing braces with the for loop? No, sir. If we are writing Sir. single line statement, then we are not supposed to put that opening and closing braces. Otherwise, we have to put it, sir. Otherwise, we have otherwise means worst case. If Means, the- sir, more If than the one several line. number of line. conditions. not several number of conditions. If the for loop having several lines of statements, then take a opening and closing braces. Clear? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. Can Hello, we sir. put Hello. So waiting my prince boulder. can we put more than one statement in one parameter place? Because for loop having three parameters. Yes, sir. We can. सब कोई समझा कि नहीं समझा? Sir, again repeat, sir. Again repeat. Okay. My question is, we know that for loop having three parameters, and those parameters are separated with semicolon. And my Yes, sir. question is simply that, can we put multiple statements in one parameter place? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Like can we put I is equal to 1, comma, J is equal to 1? Of course, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It will depend upon our requirements, sir. Okay. When for loop is suitable, which type of problem where So for if we loop is- condition no, We if will the number know of the number of repetitions. are known from the problem, sir. Acha, the number of repetition is well known from the problem, then we should We are using use the for for loop loop. using. Okay, very Yes, good. sir. And what is the importance of while loop? It allows us to solve the problem in which we know solving the problem, but not the number of repetition. Hmm. Hmm. Can you give me any problem where we know the repetition, but we don't know the number of repetition? So if we count, Like digits, or digits in a particular number. Digits in a Problems like- particular number. Number in Armstrong. Hmm? Sir, in palindrome number in Armstrong, we use while loop. Yes, sir. So lots of problem there, Hana? Yes, Yes, sir. sir. Based on the while loop. Okay. Okay. What is the break statement? Sir, it is a loop control Okay, statement sir. which is used inside whenever we want. Why, Vinayak, what do you said? Sir, loop control statements. No. This is not No, loop sir. control statement. So break is a key. You sir, are we can say now. you are wrong here. Sir, we can break is a key. Used I have Break is a key told to three terminate kind of the a loop. statement like a break, continue, and go to. Sir, it is a jumping statement. Yes, it's a jumping statement. It's a loop jumping statement. Break is a loop
jumping statements or jumping statements. ठीक है? Then what is the use of break statement in loop? Anybody? Terminate the loop. Terminate the loop. Sir, if we want to transfer our control to a particular line, then we use a jumping statement. Sir, Then what is the use of terminate break forcefully statement? loop. Vinayak? Only break statement, sir. What is the So role of breaks- break statement within loop? Sir, whenever we use break statement, sir, it does not execute the statements written after the break statement, and it transfers the control loop to the first line, which is written loop, sir. But Sir, उल्टा पुल्टा बोलता है तुम. sir. Break Terminate statement is forcefully. used for terminate the loop forcefully, sir. Break statement is used to terminate the current running loop forcefully. Sir, मतलब एकदम after बंद कर दो. termination. टर्मिनेट हो गया तो अब क्या इनिशियल लाइन? टर्मिनेट, खत्म, ब्लॉक से बाहर, एंड. ठीक है, ओके. क्या ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल सिर्फ फॉर लूप के साथ होता है या फॉर के अलावा और कहीं भी होता है? किसके संग? Nested. हाँ? Nested. Sir, it is used even after the फाइल loop. के साथ We can use in the break statement in a switch case also. ऑब्वियस, वेरी गुड. ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल स्विच केस में केस को ब्रेक करने के लिए भी करते हैं. ठीक है, ओके. Yes, sir. केस को फोर्सफुली ब्रेक करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है स्विच केस में. अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, लूप को फोर्सफुली टर्मिनेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर लूप में. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. सपोज there is a nested loop, nested for loop. So we know very well that one is the outer for loop and another one is the inner for loop. Inner for loop. If we forcefully break the inner for loop, then what happen about the outer for loop? And if Sir. we forcefully break the outer for loop, then what happen about the inner for loop? Sir. Sir, if we break the inner for loop forcefully, sir, if there are more statements written for, like, first of all we will define the outer for loop, sir, and then we will define inner for loop. So if we are breaking inner for loop, the will just go out of that inner for loop, and if there are statements written for the outer for loop, then it will execute that statement. नहीं लिखा होगा तो, आउटर में कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा होगा तो नहीं एग्जीक्यूट करेगा sir. Then it will come out from that loop, sir, and it will then again increment the value of outer for loop. It means in simply it terminates the inner for loop and outer for loop will continue. Yes, sir, we can say that one also. Okay. And what happened in the next situation? What happened when the we forcefully break the outer for loop? Then it will not execute the inner loop, sir. When we break the outer for loop forcefully, then inner loop will break automatically accordingly. Yes, sir. ठीक है, अगर आउटर को ही बंद करेंगे तो इनर तो अपने आप बंद हो जाएगा, लेकिन इनर को बंद करेंगे तो आउटर बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा. Okay, so let's come to the next term, and that is, what is a string? It is an array of First tell me Characters, sir. let me wait. First tell me what is prime number. A number which has only two factors, sir, one and itself. What is perfect number? Another one. Number. सिर्फ विनायक बोलेगा, आप लोग सिर्फ सुनिएगा.
Sir, क्या 6 आप is a लोग के perfect पास number. आंसर नहीं रहता है? आप लोग लीड नहीं कर पाएंगे? वही एक बोलता रहेगा, हम सिर्फ उसी का सुनते रहेंगे? आप सब पढ़ने आए हैं, आप सब इस बात को जानते हैं, ठीक है? आपको जैसे बोलना है, हिंदी में आता है हिंदी में बोलिए, जैसे मर्जी बोलिए, इंग्लिश में आता है इंग्लिश में बोलिए, मिक्स करके बोलना है मिक्स करके बोलिए, लेकिन बोलिए। सिर्फ वही नहीं ना पढ़ा है, वही नहीं ना सुना है, आप सब सुने हैं। वो एक दो बच्चा बोल रहा है, बाकी सब चुपचाप फॉलो अप कर रहा है, ये क्या है? ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है? एक आध क्वेश्चन में मान लीजिए आपको नहीं आता हो, तो इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग भी बोलिए। हाँ जी, परफेक्ट नंबर कौन बताएगा? परफेक्ट नंबर शंकर। Sir, it is a हाँ, positive बताओ। number. हम्म, Sir, it is a positive number which is equal to sum of its divisor. सम ऑफ इट्स Divisor. डिविजर्स। डिविजर्स होता है या Yes, sir. डिवाइजर्स होता है? Sir, divisors हमको पता है. डिविजर्स। Yes, sir. Because DIVI है तो so. अच्छा अच्छा, डिविजर्स मे बी आई So नो। maybe you are right, sir. I don't know. नो, हो सकता है आप भी सही हो, जरूरी नहीं है। No. प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत किसी को भी हो सकता है कि हम ही पहले से डिवाइजर डिवाइजर कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक हम बहुत बार डिवाइजर ही सुने हैं ज्यादातर वर्ड्स। डिवाइजर ही है सर, We commonly pronounce it as a divisor, sir. डिवाइजर ही सही है, डिवाइजर्स, ठीक है? डिवाइजर So प्रोनाउंस if होता है. perfect number is a positive number in which the sum of divisors or sum of factors except that number, because every number is factor itself, ठीक है? Of itself. So except that number, if the same as the if the sum of number is same as the number, sum of divisors Yes, same as the number, then this number is called a perfect number. अगर हम कोई नंबर लेते हैं और उसके सारे फैक्टर्स को निकालते हैं, उस नंबर को छोड़ के और सबको जोड़ देते हैं और वही नंबर आ जाता है, सो दिस इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। टेल मी अबाउट द एमिकेबल नंबर, एनीबॉडी? Sir, एमिकेबल नंबर। can I, sir? नो वेट, एमिकेबल नंबर। Yes sir, can I sir? हाँ किशन। तो सर एमिकेबल नंबर वैसा नंबर होता है जिसमें जितने संख्या रहते हैं उसका पावर को वेट, ओके। हाँ जी किशन बोल रहे थे, बोलो। किशन। Yes sir. किशन बोलिए। अरे आंसर आप दे रहे थे, क्या हुआ? Yes sir. Hello. हाँ बोलिए, वो मैं बात कर रहा था, बोलिए। Yes sir. एमिकेबल नंबर सर दो नंबर का ग्रुप होता है जिसमें कि फर्स्ट नंबर का जितने नंबर रहते हैं उसमें उतना पावर चढ़ा के जोड़ देते हो तो दूसरा नंबर आता है, उसी को एमिकेबल नंबर कहते हैं सर। ना 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 Can I, sir? ना Can ना, I, अभी sir? वेट ना, वेट। और कौन है? अक्षय। हाँ शंकर बोलो। सर एमिकेबल नंबर उस दो पेयर ऑफ नंबर को बोलते हैं जिसमें उस पेयर ऑफ नंबर में जितना डिजिट होता है वो हर एक नंबर का पावर चाह देते हैं और फिर दोनों नंबर नहीं। को इक्वल करते हैं। नहीं। May I, sir? हाँ हाँ गौरव, गौरव। May I, sir? हाँ बोलो गौरव।
सर हमें केवल नंबर 2 नंबर का पेयर होता है जिसका पहले नंबर का ऑल डिविजन को जोड़ेंगे तो सेकंड नंबर होगा और सेकंड नंबर का ऑल डिविजन को जोड़ेंगे तो फर्स्ट नंबर होगा। पहले नंबर के सारे डिविजर्स उस नंबर को छोड़ के अगर जोड़ दें दूसरा नंबर मिल जाए, और दूसरे नंबर के सारे डिवाइजर्स को उस नंबर को छोड़ के, क्योंकि हर नंबर खुद का डिवाइजर्स होता है, ठीक है, उस नंबर को छोड़ के अगर जोड़ दें तो पहला नंबर मिल जाए, तो ऐसे दो पेयर ऑफ नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? एमिकेबल। क्लियर एवरीबॉडी? दिस इज द राइट आंसर। स्क्वायर वाला नहीं है राइट आंसर, ठीक है। ओके, सो लेट्स कम टू दी व्हाट इज आर्मस्ट्रांग नंबर? So 150 is the Armstrong number, sir. If we are जितने भी हम लोग का डिजिट होते हैं उसका अगर हम लोग पावर कर दे और वो नंबर हम लोग को मिल जाए तो हम लोग सर आर्मस्ट्रांग नंबर बोलते हैं सर। जितना भी डिजिट है और उसमें जितने हर एक डिजिट पे उतना पावर करके जोड़ दे और वही नंबर आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आर्मस्ट्रांग। गिव मी वन एग्जांपल Sum ऑफ of cube, आर्मस्ट्रांग। sir. So 150 Sum of सम ऑफ Armstrong. Sir, Armstrong number will be the sum of the cube of its digits, 1 or 3. Cube of its digits. मतलब हर एक डिजिट में क्यूब करेंगे? नो सर, जो नंबर इट्स डिपेंड अपॉन डिजिट्स, मतलब जितना डिजिट का रहेगा सर उतना पावर करेंगे और उसको जोड़ देंगे। तो कोमल ने जो बताया कि सर कोई भी नंबर लेंगे उस नंबर में जितने डिजिट्स हैं पहले काउंट कर लेंगे, हर एक डिजिट पे, ठीक है, उतने काउंटिंग का पावर देंगे और उसको जोड़ते चले जाएंगे और वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग आर्मस्ट्रांग नंबर कहेंगे। और 153 उसने एग्जांपल बोला। क्या इसमें किसी को इस डेफिनेशन से किसी को दिक्कत है? नो सर, नो सर। ठीक है, तो अभी कौन क्यूब बोल रहा था? अभी क्यूब किसका था? अभी अभिषेक। सर वही बोलने का ट्राई कर रहा था मैं सर। जैसे 153 है तो सर क्यूब करके करेंगे तीनों का 153 का तो 153 आएगा, वही मतलब था। ठीक, बिल्कुल सही। ओके, सो लेट्स मूव टू दी palindrome. What is palindrome number? If There is like 1 to 1. Those number whose reverse is same, sir. The number whose reverse is same as the number called palindrome number. That is 121, 151, 111. 253. 181, 181, 11, 22, 33, 44. Okay, these are the palindrome numbers. Okay. Okay, there are a lot of kind of number system. Okay, one is called strong number. Do you know a strong number? Yes, sir. What is a strong number? Sir, a strong number is a number if we add the factorial of each digit, then if we get the same number, then it will be called as a strong number. Absolutely right. Okay, and 145 is the smallest strong number, sir. 145 is the smallest strong number. Absolutely true. सब कुछ समझ गए? स्ट्रॉन्ग नंबर हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे। सर एक बार बता दीजिए। स्ट्रॉन्ग नंबर So you are not audible. ठीक है। The number whose sum of factorial of each digit
is same as the number. Sir, screen was not shared, sir. Called strong number. Just I am writing through the chatting. मिला आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Sir, you have written string number, I guess. By mistake, sir. Called strong. Called- हाँ, उसको strong कर लीजिएगा. Yes, sir. strong. So 145 is the example. ठीक है. Why 145? Because the Because- factorial of 5 is 120, 4 is 24, and 1 is 1. 1 And if we factorial, add, factorial of 1 plus factorial of 4 plus factorial of 5, ठीक है, is equal to 145. So how? Factorial of 1 is 1 plus factorial of 4 is 24 and factorial of 5 is 120. So the round value is 145. So the number is, what is? Strong number. strong number. ठीक है, बन जाएगा. Yes, sir. अदर एग्जांपल क्या होगा सर 145 के अलावा? नहीं, और भी हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग नंबर. ये एक एग्जांपल है. बाकी नंबर को तो चेक कर ही सकते हैं आप कि और कौन कौन से स्ट्रॉन्ग नंबर है. ठीक है, जब 144 है तो 154 भी हो जाना चाहिए. फैक्टोरियल ऑफ 1 फैक्टोरियल ऑफ 5 प्लस फैक्टोरियल ऑफ 4 154 भी होगा ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, होगा. ठीक है, तो 154 भी आपका निकल जाएगा स्ट्रॉन्ग नंबर. ओके, सिर्फ ये ध्यान रखना है सारे डिजिट को निकाल के उसका फैक्टोरियल निकाल लें और जोड़ दें, वही नंबर आ जाए. तो ऐसे किसी भी नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग नंबर बोलेंगे. ओके, लेट्स कम टू द array. What is an array? Sir, array is a collection of similar elements in which all the elements are stored Similar under one element. variable. Similar elements means what? Similar data types sir. Similar type of data sir. यानी array is the collection of similar Similar or dissimilar data types. similar type data values. ठीक है. Can say derived data type also. In C, array is a collection of similar type data values. Clear? Yes, sir. ठीक है. कुछ जगहों पे ये dissimilar भी होता है, लेकिन हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं? C के लिए. Language के लिए. C में हमेशा ये क्या होगा? Similar में होगा. Similar. क्या होगा? Similar में होगा. Similar होगा, sir. Okay. Okay. Then where array is required? Because we know that if you want to store some values, there is a concept of variable in the programming. Then Sir. where array is required? Yes. So wherever we want to store multiple values, sir, we will use the concept of array, sir, because using individual variables for storing each data items will be complex. So that's why we use array everywhere wherever we want to store multiple data items under one variable name, sir. Under one variable name. Absolutely right. So how array can differentiate those numbers? By the means of index position, sir. By the means of index position. And index position start from where? Zero. sir. 0. Okay. Zero, Okay. sir. So by the name of array and with the index number, okay, which new concept is created? Name of array What, name sir? and name Next of name, sir. array